Good morning, my dear lovely patans. Welcome in science class. Yes, beta, in this class, we are going to start a new lesson, lesson 9, season and its impact. Okay. And in this class, we will discuss about Earth, its movement and effect of its movement. Okay. And also, we will discuss worksheet 1. So, let's start the meeting. Let's start the class. So open page number 90 and start reading. Okay, beta. Now, beta, this is lesson 9, season and its impact. Okay. So first topic है beta, the Earth. Earth is a blue planet where life exists. Earth is called the blue planet because of the blue waters of its vast ocean. It is all called the blue planet because almost 3/4 of the Earth's surface is covered with water. That is why it is called blue planet. Its favorable conditions support life. It is positioned at right place, thus maintain an appropriate temperature for life to flourish. अर्थ के ऊपर बेटा अर्थ इज प्रोबेबली द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट वाई बिकॉज इट हैज इनफ वाटर एंड ऑक्सीजन टू सपोर्ट प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमंस and it is neither too hot nor too cold as it is at the right distance from the sun. It is positioned at a right place. That is why it is neither too hot nor too cold. Okay, and it has enough water and oxygen to support plants, animals and humans. That is why Earth is only planet where life exists and Earth is called a unique planet. Okay, now this is Earth. Different terms that is related to Earth is first क्या है बेटा, that is axis. Okay, axis of the Earth. ये जो आपके ये वाली जो सेंटर की लाइन है, this is axis. Axis of the Earth is an imaginary line that pass through North Pole to the South Pole. ठीक है, that runs through the center of the earth and the axis is slightly tilted. ये axis जो है वो slightly टेढ़ी होती है बेटा, इस तरह से ये tilted होती है, यहाँ straight दे रखी है, वैसे ये tilted होती है, थोड़ी सी टेढ़ी होती है. ठीक है, so axis of the earth is an imaginary line passing through the north pole to the south pole and the center of the earth, and this axis of rotation is tilted at an angle of 23.5 degree. 23.5 डिग्री एंगल पे इतने टिल्टेड होता है. ठीक है, सेकेंड है पोल्स. पोल्स क्या होता है बेटा, द टू पॉइंट्स वेयर द एक्सिस सीम्स टू एंटर, दैट इज कॉल्ड द पोल्स. Okay, this is called the poles. The 2 points where the axis seem to enter are called the poles, the north pole and the south pole. ठीक है, नाउ थर्ड है इक्वेटर. इक्वेटर क्या है बेटा, दिस इज द इक्वेटर. ये लाइन जो है इक्वेटर है. इक्वेटर इज एन अनदर इमेजिनरी लाइन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ दैट डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ. जो अर्थ को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करती है, दैट डिवाइड द अर्थ एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द पोल. इट डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ, और द अपर हाफ क्योंकि नॉर्थ में है तो इट इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउथ वाले को साउदर्न हेमिस्फीयर. ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, द अपर हाफ इज नोन एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द लोअर हाफ इज नोन एज साउदर्न हेमिस्फीयर. ओके, ये डिफरेंट टर्म्स हैं, ये आपको लर्न करनी है. नाउ मूवमेंट ऑफ द अर्थ. मूवमेंट ऑफ द अर्थ. मूवमेंट क्या होती है बेटा, द अर्थ मूव्स ऑन इट्स एक्सिस एंड द अर्थ मूव 2 वेज. फर्स्ट क्या है बेटा, अर्थ मूव्स ऑन इट्स एक्सिस. ठीक है, अगर अर्थ अपनी एक्सिस पे मूव कर रही है, इट मीन्स इट इज रोटेशन. Yes beta, we already know that earth is moving all the time. Okay, it rotates on its axis and it revolves around the sun in its orbit. तो फर्स्ट क्या है बेटा, रोटेशन है. फर्स्ट क्या है बेटा, रोटेशन. ठीक है, फर्स्ट इसमें रेवोल्यूशन है, फर्स्ट रोटेशन. द अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस. दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रोटेशन. Okay, and axis क्या है, axis is an imaginary line running from the north pole to the south pole, and earth spins on its axis. When the earth spin on its axis, that type of movement is called rotation.
revolution. When the earth moves around the sun, like all other planets, the earth also revolve around the sun, that move around the sun, and this movement of the earth is called revolution. Okay, now third है बेटा orbit. Orbit क्या है? Orbit means the revolution of the earth take place in a fixed path. जो अर्थ की revolution है वो एक fixed path पर take place करती है, एक fixed path पर move करती है. It revolve around the sun in a fixed path, that is called orbit. Now solar year. Earth take 365 1/4 days to complete one revolution. One revolution is completed in about 365 1/4 days, and this time period is called solar year. Now effects of earth movement. अर्थ की मूवमेंट कौन कौन सी है बेटा? रोटेशन एंड रेवोल्यूशन. ओके, उन रोटेशन एंड रेवोल्यूशन का क्या इफेक्ट्स पड़ता है वो हम पढ़ेंगे. सबसे पहले क्या है रोटेशन का. रोटेशन, व्हेन अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस इट कॉजेज डे एंड नाइट. ठीक है, ये क्या कॉज करता है? रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट. एज द अर्थ रोटेट, द वन हाफ ऑफ द अर्थ दैट फेसेस द सन, जो वन हाफ है ये वाला पोर्शन जो सन के सामने है, दैट हैज डे, एंड वन हाफ द अदर हाफ दैट इज अवे फ्रॉम द सन हैज नाइट. ठीक है, एज द अर्थ स्पिन, फिर से वो मूव करेगी इन समाज, द डे चेंज टू, ये डे चेंज टू नाइट एंड नाइट चेंज टू डे. सो देयरफॉर रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट. That is why whenever there is a day in India, there is night in America. ठीक है, क्योंकि वो वाला पोर्शन अवे होता है सन से, तो दैट इज वाई इन अमेरिका इज नाइट एंड इन इंडिया इट इज डे. The earth rotates from west to east on its axis, thereby the sun appears to rise in east and set in the west. ओके, ये आ गया आपका रोटेशन का. और रोटेशन, वन रोटेशन कंप्लीट इन 24 आवर्स. द अर्थ टेक 24 आवर्स फॉर द अर्थ टू रोटेट वंस ऑन इट्स एक्सिस. ओके, नाउ है अब आगे बेटा आपका सीजन्स. द अर्थ एक्सिस इज टिल्टेड एट एन एंगल. ये मैंने अभी आपको बताया था कि अर्थ की एक्सिस जो है ये टिल्टेड है एक एंगल के ऊपर. कौन सा एंगल है? 23.5 डिग्री एंगल पर ये टेढ़ी होती है, टिल्टेड होती है. एंड ड्यूरिंग विंटर सीजन, ये रेवोल्यूशन का बेटा, रेवोल्यूशन कॉजेज सीजन्स. ठीक है, रेवोल्यूशन कॉजेज सीजन, एंड रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड द टिल्ट इन द अर्थ एक्सिस कॉजेज सीजन्स, चेंजेस इन द सीजन्स. ओके, सो क्या होगा? द ड्यूरिंग विंटर सीजन द एक्सिस टिल्ट अवे फ्रॉम द सन. ऑन द अदर हैंड इट लीन्स टूवर्ड द सन इन समर. As the earth revolves around the sun, some portion of the earth receive more heat from the sun, and these portion have summer season, and the other part which are away from the sun get less heat, or these area experience winter season. Okay, ये देखो बेटा, when the northern hemisphere is tilted toward the sun, it is closer to the sun. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यहाँ पर आपका साउदर्न हेमिस्फीयर है, दैट इज टिल्टेड टू द टूवर्ड. यहाँ से देखो बेटा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टूवर्ड द सन. ठीक है, सो हेयर इट इज समर, it is closer to the sun and get the direct sunlight, and that is why the days are bright and hot, and the northern hemisphere has summer. Okay, and the southern hemisphere is away from the sun, it receives slanting sunlight, so they are cold, and in southern hemisphere it has winter. As the earth revolved around the sun, the southern hemisphere get tilted toward the sun, and southern hemisphere tilted toward the sun, and northern hemisphere is away from the sun. ठीक है, so southern hemisphere has summer and northern hemisphere has winter. Okay, अब in between the summer and winter we have two more season also, that is spring and autumn. Okay, in autumn and spring both the sphere receive equally sunlight, and it is neither hot nor cold during autumn and spring seasons. Okay बेटा, तो इस तरह से आपके ये seasons बनते हैं. Okay, अब है ये क्वेश्चन आंसर्स. Why sun seems to rise from east and set in the west? ये भी मैंने आपको बताया था, सन मूव नहीं करता बेटा, अर्थ मूव करती है. अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑन इट्स एक्सिस, एंड देयरफॉर द सन सीम्स टू राइज फ्रॉम ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट. क्वेश्चन नंबर 2,
If the earth stop rotating on its axis, what kind of changes would you expect? अगर अर्थ स्टॉप कर देगी रोटेट करना तो क्या होगा? The phenomena of day and night would not occur, and the part facing the sun will have day forever, and the part away from the sun will have night forever. Okay. What would happen if the axis of earth was not tilted? Same. अगर axis जो है अर्थ की tilted नहीं होएगी तो क्या होगा? The distance of the south pole or north pole will be same, and both the hemisphere received same amount of heat, so there would be no changing in seasons. Give two factors that cause seasons, that is tilted axis of earth and the revolution of the earth. These two factors that causes seasons. Okay. So बेटा आपने ये read करना है पूरे pages 90 and 91. This is worksheet 1. Unscramble the following letters to make meaningful words. UOQEATR, that is equator. EQUATOR. OTORTAIN, that is rotation. Okay, rotation. And now ASNESOS, that is seasons. Okay. Now true false. The revolution of earth, question number 2 है, write whether each statement is true or false. The revolution of earth take place in a fixed path that is called orbit. That is true. The imaginary line that runs through the center of the earth is called axis. That is also true. Okay. Now question number 3, label the following diagrams with the given words. ये given word आपको दे रखे हैं, इसको लेबल करना है. तो ये क्या है बेटा आपका? This is north pole. North pole. ठीक है. ये पोर्शन northern हेमिस्फीयर. ठीक है. और ये जो लाइन that pass through the center of the earth, that divide the earth into two parts, that is equator. ये वाला portion half part, that is southern hemisphere, or this is south pole. Okay. Now question number 4. Fill in the blanks with appropriate word. Dash of the earth causes day and night. Rotation. Rotation. Day and night are equal in dash season and dash season. Spring and autumn. The revolution of the earth take place in a fixed path that is called orbit. Okay. Now label day and night in the following diagram and shape the part. So the part of the earth that faces the sun, that has, ये क्या आएगा बेटा? Day. यहाँ लिख लीजिए. ये वाला पोर्शन डे जो फेस कर रहा है, और ये वाला पोर्शन क्या आएगा? नाइट. That has the part that away from the sun has night. Okay. So beta, you have to read page number 90 and 91 thoroughly and do the worksheet 1 in book and learn the worksheet also. Okay. Thank you. Have a nice day. Bye bye.